शंख क्या होता था? वेदांत बताएगा, वेदांत रोज बजाता था। चलो, वेदांत इज अवर वन ऑफ द फैकल्टी लेवल में। आप प्लीज खड़े हो जाइए, हम बता रहे हैं आपके बारे में। और ये यहाँ पे योगा टीचर है और केवल नाम के पीजी के स्टूडेंट है, अभी एमए कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे शंख बजाने के बारे में। So basically, Shankh creates the sound which is called nar, which is coming from the small, we do from the small wood. So the sound of that vibration of that sound creates the spiritual plus destructs the negativity from the surrounding and create the positive atmosphere. Very good. Anyone want to say anything about this? Thank you. Attracting all negative from us first. Surrounding we don't know. Yes, इसका इफेक्ट होता है, उसका भी साइंटिफिकली रिसर्च शुरू भी है, बट यस इट्स डिस्ट्रैक्टिंग ऑल नेगेटिविटी विद इन अस. Plus the secondly, all are students of yoga, we know how to practice pranayama. Yes, mostly we all are practicing. Few are like as a newcomers are there, so they are not practicing without Kumbhaka, but you all are there practicing with Kumbhaka. Those who are in the diploma course, so if you practice the Shankana, not Kumbhak नहीं लगाना है, but बंदास के साथ अगर आप practice करोगे, so which banda you can adopt while you are practicing this. So first जब आप start करते हो तो you will find there is a मूलबंध लग जाता है आपका, and then while you are blowing it, when you start blowing it, so you start feeling, finding कि there is a like as a धीरे धीरे अपना उद्यान में लग जाता है, because you are using your own thoracic cavity for this blowing it. Also अभी thoracic cavity यूज हो रही है, तो आप बताइए आज एनाटॉमी का लेक्चर है, तो रेस्पिरेटरी पे क्या इफेक्ट होता है आपका? कैपेसिटी स्प्रेड होता है, एक्सपैंड होता है, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होता है, और ऑक्सीजन ये रिलीज ड्यू टू लॉन्ग ब्रेथ ऑक्सीजन इनटेक होती है, एंड प्लस यू आर गेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अतः योग अनुशासनम